Welcome students. Standard 9 Geometry Practice Set 1 Chapter 1 Basic Concept in Geometry. So your first question is find the distance with the help of the number line given below. So now number line you all know. You have learned in standard 6, 7th, 8th, 9th. Number line basically is what? On your left hand side you have negative number, on your right hand side you have positive number. Okay, and always left hand side is less than right hand side. Left hand side हमेशा छोटा होता है right hand side से, because numbers goes on increasing toward right hand side. Now see, it is 0, then 1, then 2, then 3. So like this numbers goes on increasing. Now let's see the first question. So first question, see number line basically क्या होता है? This side you have all negative number, here positive number, and every one unit has equal distance between them. So now distance, ये जो small letter में है, this is distance of BE. So देखो, this is your B, okay, this is your B, and E, this is your E, BE. So if you count, you will get 1, ये 2, and this 3. So 1, 2, 3. So orally you can say distance of BE is 3, but we have to find out in mathematical form. So how we will do? First, coordinate of points B का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, and E. What is coordinate of E? 5. Okay, so basically here which one is greater? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5. 5 is greater than 2. So therefore distance BE equals to subtraction. How we do? Greater minus smaller. So 3. So this is therefore distance BE is equals to 3. Okay, this is the answer. Now second question, distance of JA. So I have already written this to save time. So first step will be coordinate of points J and A. So you have to see from here. So we will need that number lines again. I have drawn roughly. Now coordinates of J is -2 and A is 1. So as a distance you can count 1, 2, 3. But while doing sums, how we will do? So coordinate of this. So who is the greater? 1, because it is positive, and -2 is negative. नेगेटिव नंबर हमेशा स्मॉलर होता है पॉजिटिव नंबर से. सो ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. सो माइनस माइनस बिकेम प्लस. सो 1 + 2 3. सो देयरफॉर योर डिस्टेंस इज 3, एंड काउंट करके भी आपको 1, 2, 3 मिला. नाउ थर्ड सम्स, डिस्टेंस PC. So coordinate of point P and C. So P is -4 and C is 3. Now see, P and C. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that means there is distance of 7, but sums के तौर पे yeah 3 is greater than -4. Positive number is always greater than negative number. So 3 minus -4. So minus into minus plus. So 3 + 4 7. So see, your answer is correct. Now distance of J and H. So coordinates of point J and H. J is -2 and H is -1. See, there is only one unit gap.
सो लेट्स सी नाउ. अभी नंबर लाइन्स में ऐसा लेफ़्ट टू राइट, राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर, तो -1 राइट हैंड साइड में है, तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2. सो यह -1 subtract -2, so minus minus plus. Okay, so -1 plus 2, तो ये ऐसा हुआ कि you have +2 and -1, plus minus minus 2 minus 1 1, so 1 is your answer. और यहाँ पे देख के भी you can make out only 1, so your answer is 1 and here also 1. ये स्टेप बाय स्टेप आपको 3 स्टेप में करना पड़ेगा. Now coordinates of distance KO. So K is -3 and O is 0. So -3 and 0. So 0 राइट हैंड साइड में है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -3. और ऐसे भी 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. सो 0 minus -3. So minus into minus plus. So 0 plus 3 3. So your answer is 3 and count करके देखेंगे तो देखो K. So 1 2 3. Okay. Now sixth one, distance of OE. So coordinates of O is 0, E is 5. 0 and 5. So greater number obviously 0 के सामने तो positive number is greater than 0. So 5 minus 0 is 5. So therefore distance of OE is 5 units. Okay, you can write units. And जब सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया रहता ना, तब हम we write units. Now what was it? OE. So OE 1 2 3 4 5. Okay, whenever they have not given any centimeter meter, we must write units. Okay, now let's go further. So seventh sums, distance PJ. So coordinates of point P and J. So P is -4 and J is -2. So obviously right hand side -2 right hand side है और P left hand side. So -2 is greater than -4. Whenever there is 2 negative number, जब भी 2 negative number होगा, so जो दिखने में बड़ा है ना, जैसे 4, वो हमेशा स्मॉलर होगा दिखने में ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर से. ओके, इन शॉर्ट, इफ यू हैव 2 नेगेटिव नंबर्स, सो द बिगर वन, द वन विच लुक्स बिगर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्मॉलर नंबर. सो हियर डिस्टेंस पीजे, सो -2 माइनस -4. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4. सो देन ये माइनस प्लस -2 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस, सो 2 4 माइनस 2 2. ओके, माइनस प्लस माइनस, अ ग्रेटर नंबर 4 है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव में. सो इसी यहाँ देख के भी पता चल रहा है there is distance of 2 and we also got 2. So distance between PJ is 2 units. Now 8th one, distance between Q and B. So Q is -5, B is 2. -5 2. Okay, so obviously positive number is greater than negative number. So 2 minus -5. So minus into minus plus 2 plus 5 5 6 7. So here distance is 7 units. Count करके देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7. Okay, Q और B के distance.
Now let's go to the next question, that is again यही है but थोड़े different form में. See, the coordinate of A is x and that of B is y. Find distance AB. Now previously last time every time there was new name, हर बार नया नया नाम दिया गया था. This time sums is same, वही सब करना है, only every time name will be AB. Okay, so and what they are saying, A जो है x के फॉर्म में दिया रहेगा, B will be in the form of y. So see first sums x and y. Since it is similar, क्योंकि ये पहले जैसा ही है, so I have again written already. Now see the coordinates of point A. x A का है 1 and point B 7. B y जो है B का है. So which one is greater? Both are positive numbers, so 7 is greater than 1. So 7 minus 1 equals to 6. So 6 units. Only the thing is that यहाँ आपके सामने अभी number lines नहीं है, so आप cross check नहीं कर सकते. So you have to subtract carefully. Second question. Now coordinates of point A is 6 and B is minus 2. So positive number is always greater than negative number. See this statement you have to write. I have already written to save time. So 6 minus minus 2. So minus into minus, ये bracket multiplication बताता है, तो minus into minus plus. So 6 plus 2 is 8. So distance is 8 units. Next sums, third sums. Again coordinates of point A is minus 3 and B is 7. Okay, so obviously positive number is greater than negative number. Okay, so 7 minus minus 3, so minus into minus plus, 7 plus 3 10. So 10 units. Coordinates of point A, so minus 4 and B is minus 5. So obviously 4 5, see, so ये जो 5 है, जो राइट हैंड साइड है, 4 के बाद 5 आता है, so this is the greater and minus 4 is the smaller. Then 4 5, sorry, negative number, sorry, negative number, my negative number goes this side, no, so 5 पहले आता है फिर 4, my mistake. So here 4 will come, 4 is greater than 5. Okay, so minus 4, then minus minus 5. So minus 4 minus into minus plus 5. So minus 4 plus 5. Minus plus minus, so 5 minus 4 1, greater number का sign, so that means 1 is the answer. So here 1 and distance between AB is 1 units. Then fifth one, coordinates of A is minus 3, B is minus 6. So again see, ये ऐसे जा रहा है, 1 2 3 4 means 3. Minus 3 is greater than minus 6. दो नेगेटिव नंबर होंगे ना, तो छोटा वाला इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. सो माइनस 3, ये फॉर्मूला है जब भी हम डिस्टेंस ढूंढते हैं ना. सो व्हाट वी डू, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. सो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर रहे हम लोग. सो माइनस 6, then minus into minus plus. So again see, minus 3 plus 6, minus plus minus. Okay, so 6 minus 3 3, but greater number is what, addition, so therefore we got 3. So here 3 units. Okay, sixth one,
coordinates of A is 4 and coordinate of B is -8. So positive or negative में positive number is always greater than negative number. So 4 minus -8 minus minus plus 4 plus 8, that is equals to 12. So distance is 12 units. Okay. Now third question, from the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. See here what they are asking, they want points in between. इनको ना बीच का point चाहिए. For example, if I am saying A, B, C, okay, यानी ये एक line बना है. This is A, this is B, this is C. The main line is what? AC. AC is the main line. But in between में क्या है? B. For example, if I am saying this is 4 and this is 3, तो ये वाला segment कितना लंबा हुआ? 4 plus 3, 7 centimeter. So B is what? ये AC कैसे बना? AB plus BC. That is 4 plus 3 equals to 7. So B is between A and C. So similarly we have to show here. Now see here greatest number, पहले हमेशा greater number को लिख लेंगे. Greatest number is PQ, distance PQ, that is 10 units. Then we have this 7 and 3, so we will do addition of that other two number, P and R plus distance Q and R. Okay, so that will be equal to 7 plus 3, that will be equal to 10. So ये 10 मिला, मीन्स इन दोनों का एडिशन, और ये भी 10 है. So distance PQ is equals to distance, ये दोनों इक्वल हुआ ना, मीन्स ये टर्म एंड दिस टर्म. So that only we will show. Okay, so y, यहाँ पे देखो इसको डॉट डॉट 1 दे देंगे एंड दिस डॉट डॉट 2. So here we will write region dot dot from 1 and 2, because 1 में भी 10 है और सेकेंड वाले 2 में भी 10 है. So they are equal. So उससे क्या होता है, when you get equal, so that means ये जो PQ है, PQ is the main segment, जैसे यहाँ पे AC था. So बीच का alphabet, which one is the middle alphabet? R. So R is the middle alphabet. So how we will show? We will say that points P, Q and R are a collinear, यानी एक ही लाइन में चलने वाला पॉइंट है, collinear points, and they want between, and here we have to show midpoint was R, no? So R is between P and Q. Actual segment PQ है और R between. So yes, the relation of betweenness follows. यहाँ पे ये point between में है. Now second sums, let me write all this. Okay, so to save time I have already written. Second sum, see distance of RS is equals to 8, ST 6 and RT 4. So first step will be in तीनों में से which one is the greater? 8. So we will write that 8 and the other two small one we will add. So distance ST plus distance RT, 6 plus 4, 10. So 1 and 2. So 1 and 2 से क्या मिला? Here we have 8 and here we have 10. So they are not equal. So वही लिखेंगे distance RS is not equal to this distance ST plus RT. ये कहाँ से मिला? From 1 and 2 से मिला. So therefore these points are not collinear. RST एक लाइन में नहीं है. एक लाइन में नहीं है means might be वो लोग ऐसे 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 हैं.
Now third one, distance AB is 16, CA 9 and BC 7. So greatest सबसे बड़ा number 16 है, so that we wrote, and other two we have to add. So उन दोनों को लिख के add किया, 9 plus 7 16. So from this is 1, this is 2. From 1 and 2 दोनों हमको equal मिला, 16 and 16. So this distance is equals to addition of this and this. So point A, B, C are collinear points. Fourth one, distance LM 11, MN 12, NL 8. तो first step greater number, then बाकी दोनों को add करो second step में. Here we are getting 18, ये 1 और 2 हो गया डॉट 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 कि ये equation 1 equation 2. Here 12, here 19 not equal, so we have to write that. यहाँ पे लिखेंगे कि ये इससे equal नहीं है. So from 1 and 2 point L, M, N are not a collinear points. Fifth sums, distance xy is 15, distance yz is 7, distance xz is 8. So greatest 15 that we wrote here dot dot 1, and other two we have to show addition. So after adding we get 15. So this one is also 15, this one is also 15. So from 1 and 2 we get that distance xy is equals to addition of this and this. So points x y z. अच्छा सी दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पर, z and z. सी y z x z. So the points x y z are collinear points. collinear points यानी एक ही लाइन में, एंड बिटवीननेस दिखाना है कौन किसके बीच में है. सो z is between x and y. Okay. Now last sums, distance GE is 5, EF is 8 and DF is 6. Greater one is 8. Other two we have to show addition. So after adding we get 11. So 8 and 11 are not equal. So that we have to show distance GF is not equal to addition of these two. So from 1 and 2 we get points GEF are not a collinear points. Okay. Now let's go to the next heading. Question number 4. On a number line, points A, B and C are such that distance AC is 10 and distance CB is 8. Then find AB considering all possibilities. Okay. अभी क्या बोल रहे हैं कि ना 3 पॉइंट है A, B, C. तो बोले उसमें से AC का मेजर दिया है और CB का मेजर दिया है. तो बोले डिस्टेंस AB ढूंढ के निकालो. ठीक है. अब हमको दे हैव नॉट गिवन रिलेशनशिप. उन्होंने ये नहीं बताया कि C बिटवीन में है, एंड में है या स्टार्टिंग में है. वी डोंट नो. सो हमको पॉसिबिलिटीज केस निकालना है. मीन्स लेट्स सी सम्स करते करते वी विल सम. Okay, so first possibility, let's assume B is between A and C. Yani this line is something like that, A, B and C. So AC, ये जो length है AC, distance AC will be equals to distance AB plus distance BC. Okay. So therefore we have AC 10. Then we have CB, yani this 8. We don't have this. This measurement is not there. So to find out this, इसको ढूंढने के लिए ये हम यहाँ पे लेके आएंगे. So whenever any number changes its place, it changes its sign as well. So यहाँ पे ये पॉजिटिव था, वहाँ गया तो नेगेटिव बन गया. So answer is 2. ओके. सो डिस्टेंस ऑफ ए बी 2. ये पहले वाले केस में हुआ. नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी, एज्यूम करते हैं कि दिस टाइम
C is between A and B, बिकॉज उन्होंने मेंशन नहीं किया है ना, सो वी हैव टू अज्यूम. सो अभी ए बी का लेंथ कैसे हो जाएगा? डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी. ओके, सो डिस्टेंस ए बी वी हैव टू फाइंड आउट टू नेम को, एंड डिस्टेंस ए सी इज 10 and CB is 8. So together it is 18. So therefore AB is equals to 18. ये second possibility में मिला. Okay, now third one. Now this time assume जो A है ना वो बीच में है and then BC. So now उन्होंने क्या ढूंढने बोला है? AB. So therefore distance, okay, first BC, actual segment BC is equals to what? Distance BA plus distance AC. So we have BC, we have 8 ना, यहाँ पे CB दिया है, CB means BC, उसको उल्टा लिखेंगे, and AC that means CA is 10. So this is 10, this we do not have. ये जो बी ए है वो एक्चुअल में ए बी है, सो वी डू नॉट हैव. अगेन वी विल टेक ये जो प्लस 10 है उसको यहाँ लेके आएंगे. सो 8 ये प्लस है, इधर आया तो माइनस. सो देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 8 माइनस 10 इज -2. ओके, देखो ग्रेटर नंबर 8 है, उसमें से -10 प्लस माइनस माइनस, सो 10 माइनस 8 2 एंड ग्रेटर नंबर का साइन, सो -2. बट कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नंबर में नहीं होता, सो वी विल नॉट एज्यूम दिस. देयर इज नो नेगेटिव distance, so distance AB equals to -2 will not be considered. Therefore ये वाला point A is between B and C is not possible. Okay, so जो starting 2 मिला that is the answer. So final answer if you want to write, यही दो आंसर है. ओके, सो नेक्स्ट सम्स. क्वेश्चन नंबर 5. पॉइंट x, y, z are collinear such that distance xy is equals to 7, yz is equals to 8. Find distance xz. So again like previous sums we have to go step by step. पहले फर्स्ट स्टेप में अज्यूम करते, यहाँ दे हैव सेट कोलिनियर यानी एक ही लाइन में. सो फर्स्ट केस में अज्यूम करते हैं दैट y इज़ बिटवीन x एंड z. सो ये xz डिस्टेंस xz will be equals to distance xy plus distance yz. Okay, so we have xy 17 plus yz 8, so that will be equals to 17 plus 8 25 units. So therefore distance xz फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी में 25 मिला. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस टाइम लेट्स अज्यूम, सी ये जो एक्स वाई जेड है ना उनको ऑल्टरनेट एवरी टाइम एक एक को मिडल में रखना है, बीच में लगा देंगे. ओके, सो दिस टाइम जेड को बीच में लगा देते तो एक्स एंड वाई. सो एक्स एंड वाई का लेंथ अगर ढूंढना है, सो लेंथ एक्स वाई कैसे बनेगा, डिस्टेंस एक्स जेड प्लस डिस्टेंस जेड वाई. Okay, so xy we have 17, डिस्टेंस xz नहीं है हमारे पास.
and then distance zy we have 8. So ये 8 यहाँ पे आएगा, मीन्स इसको अकेले छोड़ देंगे तो 8 इधर आया. सो 17 के पास इट इज़ पॉजिटिव. सो व्हेन इट चेंज इट्स प्लेस इट बिकम नेगेटिव. सो 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9. सो देयरफॉर डिस्टेंस xz इज इक्वल्स टू 9 यूनिट. सो सेकेंड पॉसिबिलिटी में, सेकेंड केस में 9 मिला. नाउ थर्ड केस, now this time we'll put x in between. Okay, so now yz, yeah, zy bolo. So distance yz or zy. So distance yx plus distance xz equals to yz we have 8, yx, see this is already given, no, वहाँ से वैल्यू ले रही हूँ 17 and this xz we have to find out. So what we will do, ये जो 17 है वो यहाँ पे आएगा. 17 अपना प्लेस चेंज करके 8 के पास जाएगा. सो इट इज़ इन नेगेटिव फॉर्म, वहाँ गया तो सॉरी इट इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म. व्हेन इट विल गो दैट इट विल बिकम नेगेटिव. सो 8 माइनस 17. सो आंसर नेगेटिव में आएगा. 8 इज़ पॉजिटिव एंड माइनस 17 इज़ नेगेटिव. प्लस माइनस माइनस, 17 में से 8 गया 9. ग्रेटर नंबर इज़ नेगेटिव. सो यह माइनस 9. सो डिस्टेंस xz is 9, but negative number we do not consider. So but we will write distance could not be negative. So therefore x between y and z is not possible, is not possible. So answer is this and this. Okay, now next sum. Question number 6. Sketch the proper figure and write the answer of the following question. So here you have to draw a line and then you have to find out. So first question is, if B is between A and C, मतलब ABC line से है and length AC is 11, length BC 6.5, then find length AB. So that means if उन्होंने sketch करके solve करने बोला है, so first draw. Now what they are saying, A C, AC is the main segment and B is between. Now see AC, this whole length is 11 unit, okay, 11 unit, and BC, so that means BC 6.5, somewhere here there is BC, this one is 6.5, itna length, so we have to find out AB. So therefore it is simple. First we will write distance AB, okay, distance AC is equals to distance AB plus BC plus distance BC. So here we have 11, here we do not have measure, put therefore it is important, and here distance BC we have 6.5. So to find out this 6 point will go here, वो right hand side से left hand side जाएगा. So this will be alone, so वो alone वाला यहाँ पे लिख लेंगे, और ये जो 11 के पास आ रहा है वो इधर आ जाएगा. So 11 minus 6.5 is 4.5. I hope you all can do subtraction. So distance between AB, we got our answer. This is the answer. Okay, so now let's do second sum. Second question,
RST, S is between R and T. So ST 3.7 and RS 2.5. See, they are in line, so it is easy. Therefore, length RT जो मेन है जो ढूंढना है RT is equals to what? Distance RS plus distance ST. So 2.5 plus 3.7. So after adding 7 plus 5, 12 and carry 6.2. So your answer is distance RT equals to 6.2. Now next sums, third one, y is between x and z, so x, y, z. Then x, z and ये पूरा is 3 root 7 and then x, y, this one is only root 7. Then find y, z. So the whole one, distance x, z will be equals to distance x, y plus y, z. So we have this 3 root 7 and this we have root 7. Root 7 का मतलब here there is no number means there is 1. Okay, number visible नहीं है मतलब 1 and here we don't have anything. We have to find out this. So this 7 will come over here. So ये जो distance y, z है will be 3 root 7 minus रूट 7. ये जो 7 था उसको यहाँ पे लेके आए राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. सो पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया. सो यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे जो विजिबल नहीं है वो 1 है. सो 3 minus 1 is 2 and root 7 will be as it is. So answer is distance yz is equals to 2 root 7 units. Now the last sums of this practice set, which figure is formed by 3 non-collinear points. Non-collinear points means जो एक लाइन में नहीं है. So for example ये आपके 3 points हो गए. हाँ, इनको आप नेम दे दो A, B and C. So इनसे कौन सा फिगर बनेगा? So let's join them and see. ओके अपने मन से कोई भी 3 पॉइंट ले सकते हो बट वो एक लाइन में नहीं होना चाहिए. दे हैव सेड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. सो आफ्टर joining these 3 non collinear point we get a triangle. Okay, what we get by joining 3 non-collinear points, a triangle is formed. Okay, and here we come to end of our practice set. If you like the video, please like and subscribe and share with your friends. Your support will help me to grow. Thank you.